Hello everyone, welcome to Mind Maps. In this video lecture, we are discussing two theories that are discussed in chromatography. Okay, these are plate theory and Van Deemter equation. So let's start. The first one is the plate theory. This is a theory that was given by Michael Sinch and it describes the process of chromatographic separation. So this is the first theory that came into perspective. Okay, why there is a separation, or to describe how the separation of a mixture takes place through the process of elution chromatography. Now we have a column, okay, that is packed with a stationary phase, and it can be divided into narrow horizontal discrete contiguous plate as given by the shaded portions of green and pink. ओके, कॉलम होता है, उसमें स्टेशनरी फेस पैक्ड होता है. ठीक है, उस कॉलम को हम हॉरिजॉन्टल प्लेट्स में डिवाइड कर सकते हैं. ठीक है, एक लैडर की तरह, उनको प्लेट्स की तरह एक के ऊपर एक प्लेट अगर हम स्टैक करते तो हमें एक कॉलम मिल जाएगा. तो हम उस तरह से उसको देख सकते हैं. तो इस तरह से प्लेट्स होती है. जब मोबाइल फेज और एनालाइट इससे पास होता है इस कॉलम से, तो हर एक प्लेट में पार्टीशनिंग होती है. ओके, वाई? बिकॉज मोबाइल फेज और एनालाइट की जो एफिनिटी है, द मोबाइल फेज एंड द एनालाइट हैव डिफरेंट एफिनिटीज टूवर्ड्स द स्टेशनरी फेज. द वन विच इज़ मोर अट्रैक्टेड स्टेज विद द स्टेशनरी फेज and the one which has less affinity gets eluted out. Okay, so this is what happens. Now the efficiency of a chromatographic process, okay, or a column, it depends on n. What is n? N is the number of theoretical plates and n depends on the length of the column. सो जितना ज़्यादा लंबा कॉलम होगा उतना ज़्यादा n की वैल्यू होगी, उतना ही बड़ा जो होगा h होगा. h क्या होता है? h इज़ हाइट इक्विवेलेंट थियोरेटिकल प्लेट. ओके, HETP. इससे हम एफिशिएंसी मेजर करते हैं किसी भी क्रोमेटोग्राफिक प्रोसेस की, या फिर स्पेसिफिकली इल्यूशन क्रोमेटोग्राफी. ओके, अब जो अगर हमें efficiency increase करनी है, if we want to increase the efficiency, we need to increase the length, but length cannot be increased indefinitely. अगर हमें किसी भी प्रोसेस की efficiency increase करनी है तो हमें लेंथ बहुत बढ़ानी पड़ेगी. ठीक है, बढ़ानी पड़ेगी, लेकिन हम लेंथ को एक लिमिट तक ही बढ़ा सकते हैं. 1 मीटर 2 मीटर, या फिर कोई दूसरा प्रोसेस हमें करना पड़े, इससे गैस में बहुत लेंथ बढ़ा सकते हैं काफ़ी. ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, लेंथ हम इनडेफिनेटली नहीं बढ़ा सकते. तो जो कहीं ना कहीं देखा जाए तो एफिशिएंसी थोड़ी कम ही रह जाती है, क्योंकि जितनी ज़्यादा प्लेट्स होगी उतनी ज़्यादा पार्टीशनिंग होगी, उतना ज़्यादा सेपरेशन होगा. तो ये है HETP. अब इसकी एडवांटेज क्या है? ओके, ये थोड़ी सिंपल सी थ्योरी है. ओके, और काफ़ी हद तक एक क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशन को एक्सप्लेन करती है, बट नहीं भी करती है. क्यों? क्योंकि जैसे आप देख रहे हो स्लाइड के राइट हैंड साइड में, आप देखो कि जो इल्यूशन प्रोसेस होता है वो ना कुछ इस तरह से दिखना चाहिए. ठीक है, जो पीक है ना, इट शुड हैव अ शार्प पीक जो मिलनी चाहिए क्रोमेटोग्राम में, वो जो होती है वो शार्प मिलनी चाहिए. लेकिन होता क्या है, जोन ब्रॉडनिंग हो जाती है. ठीक है, पीक जो होती है ब्रॉडन हो जाती है. तो इससे क्या होता है, एक बड़े एरिया में, ठीक है, एक बड़े एक्सिस पे जो पीक है वो स्प्रेड हो जाती है और हमें शार्प रिजल्ट नहीं मिलता है. तो इसके भी क्या रीज़न हो सकते हैं? तो हम कह सकते हैं कि प्लेट थ्योरी पूरी तरह से इसको डिस्क्राइब नहीं कर सकती है. अब वी हैव द वैन डीम्टर इक्वेशन. ओके, बट देयर आर मैनी अदर फैक्टर्स. बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिन पे ये जो इल्यूशन प्रोसेस है, जो क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशन है, ये डिपेंड करता है. ठीक है, जैसे कि n है. n क्या है? नंबर ऑफ प्लेट्स, राइट? सो दिस एक्चुअली इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पार्टिकल साइज, and there are many more factors which are discussed in the Van Deemter equation. Let us see how. So the Van Deemter equation is given by h
okay, h equals a plus b by mu plus c by c mu. Okay, so as you can see there are three combinations. The first one is a, it is a constant. Okay, it is a इज अ कांस्टेंट, ए जो है वो कांस्टेंट है, बी के साथ एक इनवर्स रिलेशन में, ओके, मल्टीप्लिकेशन में म्यू है और एक सी म्यू है. म्यू क्या है? फ्लो रेट, राइट. फ्लो रेट क्या होता है? मोबाइल फेस को जब कॉलम में इंट्रोड्यूस करते हैं तो ये उसका एक फ्लो रेट होता है, ठीक है. 5 ml पर मिनट, 10 ml पर मिनट, ऐसे कुछ होता है. तो हमें ऐसा फ्लो रेट सेट करना है जिससे कि हमें मैक्सिमम एफिशिएंसी मिले. हम जो मोबाइल फेज़ और मिक्सचर जो भी है उसको बहुत फास्ट भी रन नहीं कर सकते और बहुत स्लो भी रन नहीं कर सकते. वो किस पर डिपेंड करेगा? वो 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा. ए, बी और सी डिपेंड्स ऑन 3 फैक्टर्स. द फर्स्ट वन इज़ ए, विच इज़ अ कांस्टेंट. ओके, इट इज़ बिकॉज ऑफ एडी डिफ्यूजन, राइट. दीज पार्टिकल्स, okay, they have a certain shape. Let us say the stationary phase is solid and it has a certain shape and it has a packing, okay, some uniform packing or irregular packing or whatever you call it. So what happens is the spaces between these particles creates channels, okay, through which the mobile phase passes. जो एडी डिफ्यूजन है वो किसकी वजह से होता है? जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, उसकी वजह से बहुत सारे चैनल्स बन जाते हैं अलग अलग डायरेक्शन में. जो स्ट्रेट ट्रैवल करना चाहिए मोबाइल फेज, वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल नहीं करता है, वो जिगजैग हो गया, या किसी भी, जैसे कि आप रेड चैनल के माध्यम से देख सकते हो कि वो कोई भी डायरेक्शन में जा रहा है पार्टिकल्स के अराउंड, ओके, उसके बीच में जो स्पेसेस है वहाँ से ऐसे जा रहा है. तो इस फिनोमिनन को बोलते हैं हम एडी डिफ्यूजन. और ये जो पैरामीटर है ये कांस्टेंट है, ये फ्लो रेट पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है, या इसके साथ फ्लो रेट नहीं आता. नाउ अब आप बी फैक्टर देखो. बी फैक्टर क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल डिफ्यूजन. ओके, व्हेन द मोबाइल फेस पासेस थ्रू द कॉलम इट ट्रैवर्सेस इट्स पाथ. ओके, एज यू कैन सी इन द ब्लैक डॉटेड लाइन, दिस इज हाउ द mobile phase should pass through the column. But what happens is, as it is moving in a straight line, it goes sideways. Okay, sideways chala jata hai, right? So what happens is the mobile phase, it goes sideways, right? And this is due to longitudinal diffusion. This is a factor that is known as B, right? B is also a constant and it is a factor due to longitudinal diffusion where mobile phase traverses its path. The third factor is C. Okay, A, B, C. These do not have any wording as per se. We just name them randomly, A, B, C, for eddy diffusion, longer diffusion and for mass transfer. So what happens is there is no equilibrium in the column. कॉलम में कोई इक्विलिब्रियम नहीं है, ठीक है. तो क्या होता है? कॉन्स्टेंटली क्या होता है? इससे कोई भी सिस्टम कॉन्स्टेंटली इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश करने की कोशिश करता है. बट यहाँ पे जब मास ट्रांसफ़र होती है, ठीक है, एक पॉइंट पे क्या होगा, जब पार्टिकल्स होते हैं वो जब मूव करते हैं, मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं, तो एक ऐसा फिनोमेनन होता है कि कहीं भी इक्विलिब्रियम नहीं होता है मास का, ठीक है. मास चेंज होता रहता है, चेंज इन मास इक्विलिब्रियम होता रहता है. तो उसको हम जज करते हैं मास ट्रांसफ़र से, राइट. दैट इज़ द फैक्टर दैट वी टेक इन टू अकाउंट बाय अ alphabet C, and the Van Deemter equation is H is equal to A plus B by mu plus C mu. So let us just plot a graph. अगर हम इन तीनों को individually ले, if we take all these factors individually and plot a graph, let's see what happens. So as you can see the graph, okay, we have a B term, A term, C term, okay, all these are plotted. As you can see the blue line, the dark blue line, it is the A term. What happens with the A term? Okay, it is constant, so it is a straight line, right? It is constant, so it is a straight line, right? There's a straight line with A. And with B, it is a hyperbola, okay, rectangular hyperbola, because the relation was
1 upon mu, right? And then we have the c term. Okay, c term, why is it a straight line? Because it is in the form of y is equal to mx plus c is 0, so y is equal to mx, so c term it passes through the origin. Now when we combine all the three terms, we have a graph that looks like the dotted line, right? Dotted line. So what we need to do is we need to set the mobile phase velocity or the flow rate such that mu is minimum, okay, minimum, so that it gives the maximum efficiency. So it is in a region that is given by the yellow shaded portion, or the maximum efficiency it is obtained in a region that is given by this circle, right? So this is the plot where we individually plot, and when we plot the combined graph, okay, the combined curve, and how we can obtain द वैल्यू ऑफ म्यू. म्यू कैसे हम ऑब्टेन कर सकते हैं जिससे कि हमको मैक्सिमम एफिशिएंसी मिल सके, राइट? सो आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे. होप यू एंजॉयड द लेक्चर. सी यू नेक्स्ट टाइम. थैंक यू.